Here's another incident of blatant medical negligence by a hospital in UP. A 48-year-old man who had met with a train accident and severed his leg was brought to the Sultanpur District Hospital. This victim, along with his severed leg, was left lying on a stretcher for hours, and it was only when people around started clicking pictures of this man did the doctors remove the severed leg from the ward. While a probe was ordered by the Faizabad Divisional Commissioner, the Chief Medical Superintendent refuses to make any promises of action being taken against the accused medical staff. रखा ने उसे लाया गया है, ब्लड उस कंडीशन लाया गया है और चोटें गंभीर हैं। सुबह से इलाज शुरू किया गया। इलाज शुरू करने के बाद कुछ नहीं है, सही है। ना हृदय विदारक है, चोटें ज़्यादा लगी हैं और इसमें पैर अलग हो गया है और उसको वहाँ रखा गया है और उसके बाद उस हालत में लाया गया था, बाद में सही कर दिया गया। This is happening over and over again. Just about 2 weeks back, we saw the Jhansi incident, wherein in the Jhansi Medical College, another severed part of a patient's body was in fact kept as a pillow underneath his head, and that raised a lot of heckles on the government. And in fact, the government was asked very clearly uncomfortable questions. But then again, from the health minister to the health and to the medical college. To the medical education minister, on a number of times they in fact tried to convince people that in fact medical exigencies and medical services across the state will get utmost attention, but that definitely is not the case. That is not being seen happening on the ground. As in this particular case, again we see grave lapses on part of the doctors there in the emergency ward of the district government hospital, wherein his severed limb was left for almost 2 hours there on the same stretcher as the accident victim, and that could have in fact caused infections from the severed part of limb spreading further. It was only after the people started clicking pictures of the patient with the severed part of his leg kept on the same stretcher that the doctors went conscious and immediately removed that severed portion of leg from the stretcher. Right, so this was another case of medical apathy coming to light from UP Sultanpur district. Those visuals are of that man who lost his leg in an accident. He was unattended for hours and hours, and only when people around, onlookers in that hospital, clicked his pictures and demanded him to be taken to a ward, was action being taken, and was he shifted to a ward. Rakesh Tripathi joining us now the phone line. Tripathi ji, thanks for speaking to Mirror Now this afternoon. Your response each time such medical apathy incident comes to light, assurances are made by the government, yet we see another incident of similar sorts coming to light where medical apathy is at blatant display. How do you respond? देखिए, हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ये मामला संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से कटे हुए पैर को पहले तकिया बनाने का एक वाकया सामने आया था, जिसमें बहुत कठोरता से कार्रवाई उस दिन सरकार ने की थी। 2 डॉक्टर्स को और 2 पैरामेडिकल स्टाफ को सस्पेंड करने का काम किया था और एक पूरी इसमें व्यापक जांच कमेटी भी बना दी थी, जिसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके और आगे कठोर कार्रवाई के लिए हमने निर्देशित करने का काम किया था। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होना किसी अन्य अस्पताल में, यह हमारे लिए वास्तविकता में चिंता का कारण बनता है। लेकिन जिस तरह से पिछली सरकारों के समय में पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया था, तो वो प्रशासनिक कार्य संस्कृति एक इस प्रकार की विकसित हो गई है जिसमें उपेक्षा, लापरवाही बिल्कुल अनिवार्य अंग बन गई है। ये सुधारते सुधारते सुधरेगी। जिस प्रकार से भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार रहा है, घपले घोटाले रहे हैं, उसके कारण ये कार्य संस्कृति बिगड़ी हुई है। हम लगातार इसमें पूरी कठोरता रख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्य संस्कृति को हम पटरी पर ले आवें। इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन हम आश्वस्त कर रहे हैं कि इस तरह की किसी भी घटना पर पूरी कठोरता से कार्रवाई करेंगे। इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए लगातार हम एक प्रयास करते रहेंगे और एक संदेश देंगे ताकि इस प्रकार की संवेदनहीनता आगे न बढ़े। त्रिपाठी जी, बट कठोरता तो हर बार ही आश्वासन दिया जाता है सरकार की तरफ से कि कठोरता से एक्शन लिया जाएगा, बट हम देखते हैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते एवरी वीक
cases of such medical apathy come to light, और हर बात यही बात होती है कि कठोरता से एक्शन लिया जाएगा एंड अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, बट फिर से ऐसा लगता है कि वो मैसेज जो है वो इट्स नॉट बीइंग सेंट अक्रॉस. वो जो टफ मैसेज, द stern मैसेज दैट नीड्स टू बी सेंट अक्रॉस मेडिकल फ्रेटर्निटी इन द स्टेट ऑफ यूपी इज नॉट बीइंग सेंट. व्हाट इज इट दैट्स बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस? उर्वी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. वास्तविकता में अगर हम इसके रूट कॉज में जाएंगे तो मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार की भर्तियां पिछले वर्षों में हुई हैं, उन भर्तियों में ही दोष था, और भर्तियों में दोष के कारण ऐसे लोगों ने नौकरियां पाली हैं जिनकी अपने कामों के प्रति कोई जिम्मेदारी तय होती रही है, जिन्होंने पैसे के आधार पर नौकरियां पाई हैं, जिन्होंने भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरियां पाई हैं, जातीय आधार पर नौकरियां पाई हैं. वास्तविकता में वो जो इस पेशे की गंभीरता है, जो इस पेशे में संवेदनशील होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी आज अभाव दिखाई पड़ता है. और विशेष करके पैरामेडिकल स्टाफ में जिस तरह की संवेदनशीलता का अभाव है, उसके कारण इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं. लेकिन सरकार ने अपने संदेश बिल्कुल साफ कर रखे हैं कि हम इस प्रकार के किसी भी मसले पर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी तत्काल कठोरता से एक्शन लेंगे. पिछले बार के मसले में भी हमने बहुत फौरी तौर पर कार्रवाई की थी बिना इंतजार के. इस मसले में भी आज शाम तक कार्रवाई हो जाने की पूरी संभावना है, और कठोर कार्रवाइयों से ही एक संदेश बनेगा और संस्कृति जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से वर्क कल्चर बिगड़ गया था, वो बदलाव उसमें दिखाई पड़ेगा. All right, Rakesh Tripathi of the BJP assuring that action would be taken in this case, and also asking for some more time for a complete overhaul in the healthcare system of the state of UP, because remember, this is a incident that is a routine affair. If we speak about medical apathy, insensitivity from the part of medical staff that comes to light from the state of Uttar Pradesh, there, Rakesh Tripathi there. Thanks for speaking to Mirror Now this afternoon.